वाओ, ये तो फोटो से भी और ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आपका इख्तिलात कश्मीर से हुआ है ना, तो आपको जन्नत का एहसास ज़रूर होगा। और ये जगह भी जन्नत से कुछ कम नहीं है। इस खूबसूरत से नज़ारे को देखकर मैं वाकई में कह सकती हूँ, आई लव माई उड़ीसा। वेलकम टू द मिनी कश्मीर ऑफ उड़ीसा, डेरिंगबाड़ी। कहते हैं कि अगर उड़ीसा की प्रकृति और सुंदरता को महसूस करना है तो डेरिंगबाड़ी आपके मैप पे जरूर होना चाहिए। पिछले एपिसोड्स में बीचेस का मजा तो ले लिया, अब बारी आती है पहाड़ों की हरियाली देखने की। After leaving from Gopalpur, it took us approximately 5 hours to reach this gorgeous place, nestled in the hills, covered with dense pine forests and filled with a series of waterfalls. Daringbadi, उड़ीसा का एक popular hill station है for tourists to come and enjoy the natural green landscapes, beautiful hilltops and cool breeze. आप चाहे तो ट्रेन से भी आ सकते हो, as Behrampur railway station is the nearest station to Daringbadi. बहुत ही सुंदर जगह है ना, इसलिए कहा था यहाँ की हरियाली जन्नत से कुछ कम नहीं है। Well, stay along with me till the end of the episode as I'm going to take you to some of the must-visit spots of Daringbadi that will leave you even more close to nature. तो अब तक तो मैंने उड़ीसा के टेम्पल सिटीज और कोस्टल टाउन्स देखे हैं। So today I'm exploring a gorgeous hill station of Odisha called Daringbadi. ये पाइन ट्रीज, घने जंगल, वाटरफॉल्स और ग्रीनरी से भरा है। And first up, I'm taking you to a famous waterfall of Odisha called the Midubanda Waterfall. Let's go. और वाटरफॉल पहुंचने के लिए approximately 118 steps नीचे उतरना पड़ता है। And I've heard the view is worth capturing. खूबसूरती की बात ना कुछ अलग ही होती है। No wonder the Midubanda Waterfalls is such an iconic tourist attraction in all of Odisha. The rushing force of the waterfall amidst so much greenery. अगर पानी इतना ठंडा नहीं होता ना, तो मैं अंदर जाकर डुबकी जरूर मारती। वाटरफॉल के बाद मैं तो जा रही थी कॉफी गार्डन, बट बिफोर दैट आई स्टम्बल्ड ऑन दिस लश ग्रीन पाइन फॉरेस्ट ऑन द वे. इट्स जस्ट सच अ ब्यूटिफुल साइट. Innumerable pine trees standing in symmetry next to each other, a clear blue sky and the shimmering rays of the sun peeking on top from the pine trees. It's just such a gorgeous sight. ये spot nature lovers के लिए तो मतलब ideal है. It's said that Daringbadi is one of the largest coffee producers because of its favorable climate. और ये है Daringbadi का coffee plantation garden. यहाँ पे काफ़ी सारे pepper trees भी grow किए जाते हैं, and it's considered to be one of the oldest coffee tree growing gardens in India. You can just come here and enjoy a pleasant stroll amidst pepper and coffee trees.
corner of this hill station is beyond spectacular. मैं पहुंची हूँ डेरिंगबाड़ी का hill view point. There are dense forests, gorgeous valleys and picturesque mountains all over. मुझे नहीं लगता है कि उड़ीसा की खूबसूरती लोगों तक पहुंच पाई है. This is a destination not worth missing. And if you want to witness the beauty of untouched nature, a 1-hour drive to Mandasaru Valley is recommended. It's also called as the Silent Valley of Odisha and is a popular tourist attraction surrounded with flora and fauna. और अब मैं जा रही हूँ डेरिंगबाड़ी का सनसेट देखने. चलो चलो चलो, before we miss it. बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है ना? Well, I was only hoping that the golden rays of the sun embrace itself for a little longer. But because of the cloudy and foggy skies, the view is a little interrupted. But I can't say it's any less beautiful. Well, that was it from Daringbadi. But if you want to experience similar beauty, then I suggest you take a trip down south of Odisha to the picturesque small town of Koraput, जो करीबन 5 से 6 घंटे का हसीन रास्ता है. The beautiful foggy roads, dense greenery was truly the highlight of my trip. Koraput, Odisha का एक छोटा town है and it's also called as the heaven of Odisha as well. And it's widely known for its weekly Onukudeli tribal market. अब कोरापुट से 1 घंटे दूर है रानी दुदमा वाटरफॉल. It's also one of the natural beauties of Odisha and is known as the Queen of Falls because of its gushing force of the water. The water here is crystal clear and is a fun picnic spot for tourists as well. Wow, इसे कहते हैं beauty at its peak and I am on the peak. ये है देवमाली हिल जो उड़ीसा का highest peak है. And if you want a bird's eye view of Odisha's highest peak, then a trip to Deomali Hill is a must. It's a 1.5-hour drive from Rani Dudama Waterfall और यहाँ का view मानो एक 360-degree panoramic view है of nothing but beauty. वाकई में जितने खूबसूरत है उड़ीसा के बीचेस, उतनी ही है खूबसूरत यहाँ की ग्रीनरी. So that was it from my end in the picturesque hill stations of Odisha. Wait for the next episode of I Love My Odisha as I take you to the mini handloom capital of Odisha, Sambalpur.